इस चैनल के देखने और सुनने वालों को सभी को एम्स जम्मू का सेहत भरा नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रोफेसर जेबी ज्योतिर्मय विश्वास सर। प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी में, डायरेक्टर हैं यूवीआईटी शंकर नेत्रालय चेन्नई में। सर, इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, मुझे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन। I am not a big doctor. I am just small doctor. I started in 40 years back in Shankar Netralaya in South India, Chennai, as a consultant. I was first as a fellow, as a consultant. Now is a director of uveitis and ophthalmic pathology in the same center. Um, I do ophthalmic pathology as well as the uveitis, and 40 years I am in the same institute. सर सर जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ सर, यू हैव not only educated so many students, you have elevated the standard of eye care in India. So what are the current challenges you see कि इंडिया जो है उसमें हेल्थ केयर को लेके what are the current challenges which a professional is facing right now? So आपके हम ये जानना चाहते हैं सर, आपने अपना समय दिया, एम्स जम्मू को विजिट किया, क्या एम्स जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी को क्या चैलेंजेस आएंगे और उन्हें अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखना है? The number of population is definitely increasing. People are health conscious. People are seeking for good health, good treatment, good diagnosis, and it is now duty for all specialists or clinicians to provide such good care as well as with empathy and human touch. And it's a very challenging situation with a lot of technology available now to apply this technology and at the same time keep that human touch with the patients, the poor patients, to provide such kind of care is difficult. Professor Shaktu Gupta has done a wonderful job. I have not seen such a huge campus in India or abroad. And it's such a vision, that type of vision which Dr. Badrinath had in Shankunetra and built up from a small hospital to a big institute with a clinician and the research. I think is that Jammu AIMS should not only do the clinical research, they would also should do the basic research, telemedicine, and artificial intelligence. All these things has to be adopted in this setup. सर, आपने अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस में, अपने जीवन काल में, यू हैव नॉट ओनली रिस्टोर्ड द लाइफ, यू हैव नॉट ओनली रिस्टोर्ड द आई साइट ऑफ पीपल, बल्कि यू हैव गिवन देम अ सेकेंड लाइफ, बिकॉज वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आई साइट इन दिस लर्निंग, वर्किंग, एवरीथिंग इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग। सर, जनरल पब्लिक के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग दिस प्रोफेशन एंड ऑल्सो फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स हु आर प्रैक्टिसिंग दिस प्रोफेशन, सर आप एक संदेश जो आपने इनको देना चाहेंगे सर? I think is that symptoms, any symptoms in the eye, the patient should not ignore. They should seek the opinion from an ophthalmologist, nearest ophthalmologist, because the eye symptoms can be very trivial, but it can indicate that there is something serious going inside the eye, like floaters. There is something floating in front of the eye, but it might be a retinal detachment behind that eye, or maybe an inflammation behind the eye. And students, for which I want to give importance, students in this normal modern technology, they should not forget the patients as a human being, the human touch. You should not forget. You should not put the room light off and start seeing the patient's eyes without looking at the patient's eyes, face to face talk, not looking at the computer monitor, and that kind of empathy, care should be taken. And Dr. Badrinath has taught us that patients should be taken care like your family member. So that kind of thing, approach should be there, even with this modern technology. Sir, when you have talked about technology, so sir, many a times we have come across problems because of the lot of on-screen time people are spending. चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कुछ है, बहुत सारा समय हमारा ऑन स्क्रीन टाइम पे जाता है सर। उस ऑन स्क्रीन टाइम को लेके जो आईज के इश्यूज होते हैं, चाहे वो ड्राई आईज हो, चाहे वो आईसाइट को लेके हो, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग योर आई? You know that you should not avoid that long screening time.
But what you should do, you should close the eye every half an hour, blink it. And this is just like, wiper in the eye. The lid acts as a kind of moisturizing the eye. You may not need artificial tear. Sometimes you do need, but many of the times just blinking the eye would solve the problem. And you should not at a stretch you work for on 1 hour. Every half an hour, you should stop, blink the eye, take a little break, and then start seeing the screen. It's not necessary to stop doing the long working out if it demands. Thank you, sir. Thank you for your time. And we know you're very busy and you are just giving second life to the people. Thank you that you have visited Jammu. And thank you for your kind words. कि आपके जम्मू के एम्स जम्मू और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए यू आर हैविंग अ वेरी प्रॉमिसिंग विजन. And definitely, sir, collaborations में AIMS Jammu has always believed in collaboration. We also request you to visit us this thing and to be a part of many research projects that are going on. Sure. I'm trying to do some work on ophthalmic pathology. Yes, sir. तो जितना मैं सर की बात से समझ पाया, सर मैं आपको उसको अपने शब्दों में बयान करना चाह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो रेगुलर आई केयर के लिए हेल्थ चेकअप्स जो है वो करवाए, हेल्दी न्यूट्रिशन ले और ऑनलाइन जो अगर स्क्रीनिंग टाइम पे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस ले, जैसे हाफ एन आवर के बाद स्क्रीन से उठे, आइज़ को ब्लिंक करता रहे एंड दिस थिंग. एंड देन फॉर स्टूडेंट्स यू वांट कि दे शुड कंटिन्यू विद द प्रिसीजन and compassionate care they should give to the patients. And for the professionals, you have a message that you have to innovate, you have to and educate your students and the public, and also to elevate the standards of healthcare, which is very much required. सर आपका संदेश सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी प्रोफेशनल्स के लिए एक रिगार्डिंग आई केयर एंड अदरवाइज, बिकॉज यू आर ए वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत एक नॉट ओनली ए प्रोफेशनल बट आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से regarding this? Don't stop questioning. Only one word. In the research, don't stop questioning. Question your teacher, question your book, question your existing knowledge, and learn. Stay curious. Stay curious. Stay foolish. Stay hungry. Thank you, sir. Thank you, sir.